Live now, Suprit so we can start, please. I welcome our guest of honor, Shri Dilip Thakurji, who is the Minister for Labour and Employment Department in Government of Gujarat. मैं दिलीप ठाकुर जी हमारे मंत्री श्री श्रम और रोजगार विभाग का यहाँ पे स्वागत करता हूँ. We also have eminent people among us. So British Deputy High Commissioner Mr. Peter Cook and Dr. Rodney Revere, who is the project head at GIZ Germany, is there with us today on the inaugural panel. We also have CEO Ravi Gupta of Elets Technomedia, who is the organizer with us. And needless to say, our guidance for the entire summit, ACS Additional Chief Secretary, Labour and Employment Department, Vipul Mitra sir is here. Vipul Mitra sir, I please invite you to deliver a welcome and your keynote address, sir. Before I start, I would like to really acknowledge the efforts of Elets who are amongst us. Ravi is here and his entire team is with us for enabling us to hold this session technically. So I would really like Ravi to speak a few words for the convenience of everybody about Elets and what you are doing and how this whole idea, which we actually conceptualized somewhere in December, November, before the lockdown, we wanted to have a big international conference at the Statue of Unity in Gujarat, which is the world's tallest statue. And we had planned it somewhere in the month of January, February, and then the lockdown happened and the whole thing got postponed. So Elets has been with us for a long time. In the past also, I have held several summits with them. I have attended many of their summits. So Ravi is the CEO of that and chairman of Elets Group. So I would really like Ravi to give some 2-3 minutes, 4 minutes briefing on what Elets is doing and particularly how you are yourselves coping up with post-COVID lockdown situation. Yeah, Ravi. Sure, sir. We at Elets are honored to be part of this very important session which is going on. And Elets is an organization which is 17-year-old and we have been publishing a magazine called Digital Learning for last 15 years. And Digital Learning is India's first and Asia's first and monthly magazine on education innovations using ICT. And we have been focusing on the skill sector in a big way, besides higher education and school education, and also the preschool education. And this idea of holding a conference on the skill development. Sorry, I think you has some issue. So this idea of holding a conference on skill development occurred to us with our conversation with Vipul Mitra ji, and we had been working with it for a long time. And Elets has been organizing several conferences outside India, including Dubai, Bahrain, and Thailand, and Malaysia, Singapore. Also, we have done education conference in UK and USA. And the idea was to look at how can collaborations happen between countries on the skill development, and also collaboration inside the country in various states. And Elets is also working in a big way in innovations in the governance space, smart city space, transportation, housing, and healthcare, and BFSI space. So our idea at Elets is to document innovations and create platforms where knowledge sharing can happen and collaborations can happen. And in this series, it is a great honor that on the occasion of the World Skills Day, we are hosting this summit online, where several experts from outside India and also from our country and various states are participating. And I'm also happy to inform everyone that we are live right now on YouTube and Facebook. And as our technical team says that more than 1,000 people are watching us online right now. So with this, I end this speech and I welcome all the eminent speakers of this session. Thank you and namaskar. Sir. Okay, that's good. So
रवि, थोड़ा 2 शब्द हिंदी में बोलेंगे आप, जस्ट फॉर हाँ हाँ बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी हियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे जो ऑडियंस है आज, जो हजारों लोग आज हमें जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये वर्ल्ड स्किल्स डे है, विश्व स्किल दिवस है। और स्किल डेवलपमेंट की जो इम्पोर्टेंस जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो बताई है और हमें जो मार्ग दिया है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो स्किल पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और स्किल सेक्टर में जो अब तक जो चैलेंजेस रहे हैं कि फंडिंग के चैलेंजेस रहे हैं, पॉलिसी के चैलेंजेस रहे हैं, जो आज की जो हमारी सरकार है उसका काफ़ी फोकस है कि उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए, उन पॉलिसी रिफॉर्म्स के पर ध्यान दिया जाए। और स्किल डेवलपमेंट में जो फंडिंग है उसकी काफ़ी फोकस हुआ है इस सरकार में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के दिन हर राज्य सरकार और जो राष्ट्रीय स्तर पे भी स्किल डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन पे एक फोकस है। आज हमारे साथ जर्मनी के एक्सपर्ट मौजूद हैं, आज हमारे साथ यूके के एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमारे साथ पीडी लाइट के डॉक्टर पीके शुक्ला जी मौजूद है हमारे साथ। और इसके जो पहले जो सेशन था और जो आगे जो सेशन होने जा रहा है उसमें हमारे पास अलग अलग राज्यों से, तेलंगाना से और अलग अलग राज्यों से एक्सपर्ट्स आकर स्किल जो इनिशिएटिव्स अलग अलग राज्य सरकारें ले रही है उसके बारे में उन्होंने बात की है। और इंडस्ट्री आज हमारे साथ जुड़ी है इस आज के सेशन में। मारुति से, पिडीलाइट से और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमें आज बताएंगे कि स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, क्या क्या प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव है, क्या क्या गवर्नमेंट सेक्टर के इनिशिएटिव है, और दोनों के बीच में कोलैबोरेशन कैसे हो। ये जो एक विषय है जो आज के जो हमारे पैनल डिस्कशंस में जो है डिस्कस हो रहा है। तो इसी के साथ मैं सबका स्वागत करता हूँ। और मैं रवि गुप्ता, मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ एलेट्स टेक्नोमीडिया का। ये हमारी 17 वर्ष पुरानी संस्था है जिसका फोकस है कि इनोवेशंस पे फोकस किया जाए कि किस प्रकार से नवाचार हो सके और नए नए तरीके से एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो नए नए इनिशिएटिव पूरी दुनिया में हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा हो, उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस हो, जिससे कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस चाहिए अपने कैरियर में, अपने स्किल डेवलपमेंट के जो उनके कोर्सेस में और जो उनका आगे कैरियर में बने उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस चीज़ को समझें कि स्किल डेवलपमेंट के बिना भारत की तरक्की हो नहीं पाएगी। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, इस विषय की महत्वता को ध्यान में रखते हुए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हम बहुत आभारी हैं कि आज गुजरात सरकार इतना फोकस है आज गुजरात सरकार का कि उन्होंने इतना अच्छा एक जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है उनके ही तत्वाधान में, उनके ही कोलैबोरेशन में। तो इसके और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है जो हमारी ऑडियंस है कि इस कार्यक्रम के जितने पैनल डिस्कशंस हैं उनको ध्यान से सुने। और ये यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर लाइव है, तो कृपया उसको लाइक और शेयर करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। नमस्कार सर। Okay, so और आज हमारे साथ डॉक्टर पीटर कुक मौजूद हैं जो yeah, so Ravi, I think what we do is I'll just go to the Honorable CM to brief him and bring him around. Meanwhile, the points गुजरात सरकार क्या कर रही है उसके बारे में हमारे
मिनिस्टर हमारे साथ हैं श्री दिलीप ठाकुर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा दो शब्द आपको ब्रीफिंग तब तक अपना मंतव्य आपको बताए। श्री दिलीप ठाकुर गुजरात सरकार के बहुत सीनियर मंत्रियों में आते हैं और बहुत समय से विधायक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उनसे मैं विनती करता हूं कि आपसे बात करेंगे। गुड इवनिंग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ के दिन आयोजित विश्व युवा कौशल दिन के अवसर पर सभी युवाओं, उद्योग एवं कौशल बढ़ोतरी के लिए काम करने वाले सभी संगठनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान के इस युग में गुजरात का युवा विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार कटिबद्ध है। गुजरात में 287 हमारी सरकारी आईटीआई में 1,80,000 सीटों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनमें 22,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ 171 सरकारी आईटीआई को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अपग्रेड की जाती है। सरकारी आईटीआई में पिछले 2 सालों में 50,000 जितनी सीटों को बढ़ोतरी के साथ 1 लाख जितनी सीटों को एनसीवीटी एप्लीकेशन प्राप्त किया गया है, जिसकी वजह से गुजरात का युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर रोजगार के लिए दावेदार है। आईटीआई में उद्योगों की मांग की ओर से नवीनतम तकनीक के अनुसार 24 नए प्रकार के जैसे कि आईओटी टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे अभ्यासक्रम भी शुरू किए जा चुके हैं। राज्य की आईटीआई में पिछले 5 वर्षों में तकरीबन 2,000 प्रशिक्षकों की भर्ती की गई है। तकरीबन 2300 प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब चल रही है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम अगस्त 2016 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। समग्र देश में 70,000 से ज्यादा उद्योग भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकृत है, जिसमें गुजरात के 18,000 से ज्यादा पंजीकृत उद्योग संख्या के साथ समग्र देश में प्रथम है। इतना ही नहीं, इसी स्कीम से प्रेरणा लेकर हमारे मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप तालीम योजना गुजरात में लागू की गई है। तो समग्र देश में पहला हमारा गुजरात है। हाल ही में तकरीबन 50,000 के करीब अप्रेंटिसशिप उद्योग प्रशिक्षण ले रहे हैं। नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के अनुसार मौका मिले, इसलिए राज्य के 46 रोजगार कार्यालयों में कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध है। नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार मेले का आयोजन गुजरात में किया जाता है। राज्य के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से पिछले 2 सालों में 7 लाख से
ज्यादा उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तकरीबन 2000 रोजगार भर्ती मेले के आयोजन से 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार को चयन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती के उद्देश्य से उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत पिछले 2 सालों में राज्य भर में कुल 140 प्रशिक्षण वर्गों के आयोजन से 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से हमारे गुजरात के सुरक्षा दलों में राज्य के 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों को चयन किया गया। नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों को विदेश में अभ्यास एवं रोजगारी की मार्गदर्शन मिल पाए, इस उद्देश्य से राज्य में अहमदाबाद, बड़ौदा और राजकोट में कार्यरत विदेश रोजगार एवं व्यवसाय मार्गदर्शन के केंद्रों के माध्यम से पिछले 2 सालों में कॉलेजों में तकरीबन 750 से ज्यादा सेमिनार का आयोजन भी किया गया था। 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को मार्गदर्शन उसके माध्यम से दिया जा रहा है। स्वरोजगार की विविध योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के रोजगार कार्यालयों ने पिछले 2 सालों में 1700 से जितने स्वरोजगार शिविरों का आयोजन करके 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारत सरकार के जून 2020 में प्रसिद्ध किए गए पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल की आयु की मर्यादा में किए गए सर्वे में देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात का बेरोजगारी का दर सबसे नीचे है। हाल ही में भारत सरकार का गुजरात सरकार को और टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से आईआईटी और आईआईएम जैसे अत्याधुनिक संस्थाओं की तरह भारतीय कौशल संस्थान आईआईएस की आधारशिला माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से रखी है, जिसके लिए गुजरात सरकार ने 20 एकड़ जमीन दी है। हमारा लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मौजूदा कौशल संस्थानों के सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ एक विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र बना है, जिसमें से प्रति वर्ष 5000 विद्यार्थी उच्च तकनीकी कौशल प्राप्त पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले गए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें भारत में उत्पादित चीजों को प्राधान्य देना होगा। भारतीय उद्योगों को आने वाले समय में जरूरी कुशल मानव बल देने के लिए गुजरात राज्य हर संभव प्रयास करेगा। उद्योग अपनी जरूरत के हिसाब से राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण अपने उद्योग में देंगे। अपने कुशल मानव बल की जरूरत और युवाओं को रोजगारी जरूरत को पूरा कर पाए, इस उद्देश्य से राज्य के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा आज रोज प्रोजेक्ट संकल्प योजना शुरू की जा रही है, जिससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी एवं प्रोडक्ट गुणवत्ता में सुधार होगा। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी आपको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, उनके प्रयासों को देखकर मुझे गली दहीवाला की पंक्ति याद आ रही है।
साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। आए हम साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को हम सब साथ मिलकर इस सपनों को साकार करने में मदद करें, ऐसी मैं अपेक्षा पर रखता हूं। आज के दिन जो कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे समय में आप सबके परिवारों को सुरक्षित रहे, ऐसी पर मैं आशा व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। So, thank you very much, Honorable Minister, and we have our Honorable Chief Minister has just arrived, and I'll just get him in about 2-3 minutes, and then we will start with. I think Mr. Rodney will be there, and then Peter Cook will be there, and then Chief Minister will say a few words. Right? So just give me 2 minutes. ब्राइट फ्यूचर के लिए जरूरी क्या है? कुशलता, इच्छा शक्ति और उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहें तो स्किल, विल और ज़ील। जैसे पंच महाभूतों से एक सक्षम शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही 5 स्तंभ वाले इस अभियान द्वारा सक्षम गुजरात, आत्मनिर्भर गुजरात के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और जब बात मजबूती की हो तो सबसे पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है, जिसके लिए शुरू किया गया ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम। गुजरात इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के तहत जर्मन सरकार की ऑर्गेनाइजेशन GIZ की सहायता से राज्य में अत्याधुनिक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स सेंटर्स शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। साथ ही GIZ के सहयोग से राज्य की ITI में इंटरनेशनल लेवल की हाईटेक लैब्स का भी होगा विकास। एक तरफ जहां हमारे युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्रीज की आवश्यकताओं पर आधारित स्किल्स, तो दूसरी तरफ एक ही साल में 4000 से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स को और 70,000 से ज्यादा युवाओं को इन एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ अप्रेंटिस के तौर पर जोड़ने का रिकॉर्ड भी गुजरात के नाम है। जैसे मैनेजमेंट क्षेत्र में IIM और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में IIT प्रसिद्ध है, वैसे ही अब हमारे गुजरात में भी होगी टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS की स्थापना। गांधीनगर के नासमेद में 20 एकड़ जमीन पर माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित भाई शाह के द्वारा इसका भूमि पूजन भी हो चुका है। परंतु आप कहेंगे कि कोरोना के प्रभाव से उद्योग भी नहीं बच पाए हैं। इस कोरोना महामारी में भी गुजरात के श्रम एवं रोजगार विभाग ने उत्कृष्ट कार्य किया है। एक तरफ श्रम कानून में सुधार किया, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत ली जाने वाली पूर्व अनुमति की संख्या 100 श्रमिकों से बढ़कर 300 कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट मजदूर अधिनियम 1970 लागू करने हेतु श्रमिकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई और फैक्ट्री अधिनियम 1984 के तहत कानून लागू करने हेतु श्रमिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। तो दूसरी तरफ वतन जाने के लिए इच्छुक लगभग 14 लाख श्रमिकों को रेलवे मंत्रालय के सहयोग से सुरक्षित घर पहुंचाया गया। अनलॉक 1 में उद्योग शुरू तो हुए, परंतु स्किल्ड वर्कर्स की कमी के कारण उद्योगों को कठिनाई पेश आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सक्षम गुजरात के तहत 5वें स्तंभ प्रोजेक्ट संकल्प की शुरुआत होने जा रही है। आज का समय स्किल का समय है। स्किल से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है और आपत्ति को अवसर में परिवर्तित करना गुजरात का संस्कार है, स्पिरिट है। आज कोरोना महामारी के इस कठिन समय में उद्योगों को
स्किल्ड वर्कफोर्स और युवाओं को रोजगार मिले, इस आशय के साथ हमने बाय द इंडस्ट्रीज, फॉर द इंडस्ट्रीज, इन द इंडस्ट्रीज के कंसेप्ट के साथ प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया है, जो कि आने वाले समय में कौशल विकास और रोजगार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। और इससे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर और सक्षम गुजरात का निर्माण करने के लिए और कदम बढ़ा रहे हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में इन 5 स्तंभ के निर्माण से सक्षम बनेगा गुजरात, आत्मनिर्भर बनेगा गुजरात। जय जय गर्वी गुजरात। जय हिंद। Okay, thank you. And for the nice film, which is made only yesterday, I think it will be uploaded on the social media very soon. So, as we await arrival of Honorable Chief Minister in a few moments, he's going to be here. I would like to just mention to you, Honorable Minister has covered all the points, most of the points of what the state government has done in the field of skilling. Gujarat has the lowest unemployment rate in the country. Compared to any other state, we have only 3.4% unemployment. So Gujarat is basically a net employment provider. If you see the migration which happened after the lockdown, and large number of people went out of the state, almost 2 million migrant workers, which is a huge number by any standard, left Gujarat after lockdown to go back to various states of their origin. Because of the conditions of lockdown, we tried our best to make them comfortable. We set up 206 labor camps. We made sure that even though there was a lockdown, we declared various notifications and requested industries to pay to them wages, even if the industries were locked down. And industries paid a huge amount of wages to the tune of almost 1,600 crore rupees to large number of workers during the lockdown. The government also distributed free food grains to workers, which is even now continuing to everybody. Almost 6.5 million people were given food grains every month, and they are still being given. And as the Honorable Prime Minister has announced, they will be given till the month of November. It will continue. So we were the first state to start the initiative. And when, despite all the comforts, all the arrangements which we made, all the labor camps which we set up, unlike many other states, there was very smooth system of keeping people here. There was a huge demand because in such situations when there is no work, the families want their people to come back and be with them. There was also a general feeling that in rural areas there is lesser COVID, so people wanted to go back to their villages in UP and Bihar and West Bengal and various other states. So there was a lot of demand which started here, and we were one of the first states to start the Shramik Special Express trains, as you would have known. In a period of 30 days, we sent out over 1,000 trains, sending out 1.5 million migrant workers to their hometowns in the most systematic manner, after duly checking them in terms of their health conditions, collecting them at labor camps, coordinating with incoming states. And it was the biggest migration, though planned,
which has happened in Indian history since the partition of the country in 1947. So 1.5 million people were moved out very smoothly without any problem. Most of the people went from Surat and most of the people went to UP, Uttar Pradesh, which is the biggest state which provides labor to everybody. Now, the figure itself shows that there are hardly any laborer coming from outside the state, Gujaratis who are settled outside the state and coming back into Gujarat was negligible. So we can make out that Gujarat is basically a state which provides employment to people and it is a net employment giver state. And Gujaratis are entrepreneurs, so we provided employment to a large number of people, not only Gujaratis. As you know, the unemployment rate is only 3.4% for the state, but also people from outside, about 2 million people from outside the state who went back and maybe some who did not go. So it is estimated that about 3 million outsiders are working in Gujarat at the level of organized and unorganized sector. So these people went back smoothly and now the industries are opening up, they are all coming back and we are reskilling a lot of jobs. It's a big challenge because today's theme is post-COVID, what we should be doing. As Minister mentioned to you, we have the ecosystem for training comprises of ITIs. So we have 287 government ITIs, almost one ITI in each taluka. We have 1.6 lakh or 160,000 trainees every year, which are trained in the ITIs in 1 year and 2 year courses, and they move out and start working in the private sector. Almost all of them who want to work get a job. We have almost all our ITIs have their own buildings. Almost all of them have connectivity, and now with the help of GIZ, we are going to upgrade the ITIs. The budget has been also approved by the state government, and the Minister and Honorable CM have approved the grant. So we are in touch with GIZ. I am hoping that quickly with their help and with their support, we will be able to upgrade our ITIs in the coming months and coming years to come. The second important part of the ecosystem, skilling ecosystem, is the apprentice scheme. Under the National Apprentice Scheme of the Government of India, we have last year given apprenticeship to about 77,000 trainees in the industries, which was largest in the country. Almost 1/3 of India's total number of apprentices was in Gujarat. There was a big campaign which was spearheaded by Chief Minister himself, and we could do a lot of work in the field of apprentice. I would also like to mention that during the lockdown, we in our 287 ITIs, we have about 6,000 instructors, and they were all waiting for the ITIs to open, classes to start. So they were sitting at home. So government thought that we should utilize their time because we were also giving them salaries. And so we requested them and roped in some of the good speakers, and we created 2,000 hours of online content, 2,000 hours of content during the lockdown, and which has been uploaded in Gujarati language with all demonstrations. And students, these 1.6 lakh students, even who are trainees from ITIs, can access that content even sitting at home through their mobile phones. So we have utilized the time, and this is what has happened in the state during lockdown period. Gujarat government has also been on the forefront so far as labor reforms are concerned. We have reformed various labor laws, particularly Factories Act and Industrial Disputes Act. These are both very old acts, and we brought out reforms in them to make it easier for the people to invest money into them, into new industries and factories.
the government also decided, since a lot of people left and factories were restarting, we did not expect people to immediately return because people also want some level of comfort before they come back. So what to do? So government thought very creatively to increase the shift timing from 8 hours to 12 hours. So Gujarat was one of the first states in the country to increase the time of shift from 8 hours to 12 hours and without payment of overtime charges. In other states, when you make it from 8 hours to 12 hours, for the 4 extra hours, you have to pay double wages. In Gujarat, we kept it at the same level because we argued with the trade union federations that, look here, when people were sitting at home and factories were locked down, they were being paid wages. And now that the factories need people and the people are not there, we have to allow people who are available to make them work for longer hours. So Gujarat, our labor union federations are very, very proactive and very positive. As a result, they all agreed. There was not a single whisper of any opposition to the idea. And every laborer in the state agreed to work for 12 hours without asking or demanding for double wages. So which is a great thing. So we started that, and then many other states also followed. So we also allowed factories, gave them a blanket permission to start 24 hours shift. So any factory in the state without any permission could start working round the clock. Other than factories in service sector, any shop or establishment which are registered under the Shop and Establishment Act, all the shops, all establishment, all offices, all call centers, all hospitals throughout the country were allowed to work 24 hours around the clock. And so all the restrictions of license or permits was lifted to enable people and to help them invest. Many other reforms were carried out. For example, Contract Labor Act, we carried out reforms to dispense with the need to renew the license for the contractor, for the registered contractor, and from 20 to 50, if he has up to 50 labor, he doesn't even need a license. So the contractors were freed, the labor contractors were freed from the requirements of licensing. So what we did was, in terms of factory inspections, we basically, we made all inspections based on the mobile app, and we called it Simple. So it is basically an app through which our labor inspectors will go to various factories and they will inspect a factory on the site, and in case there is any lacuna, any mistake, any problem, the labor inspector is required now under this new regime to take a picture or a video and upload it. So a lot of irregularities or instances of occasional instances of corruption or instances of people trying to sit in offices and fill the forms, etc. Were taken care of, because now people have to actually visit the factory and in case of a lacuna take it online and upload it. So one of the few states in the country which started online inspection of factories. So with all these large number of reforms, our department has actually done a lot in terms of lifting the restrictions on industries and service sector. So today what we are essentially doing is, when Chief Minister comes, I'll talk about it also, and basically we want to focus on service sector and the challenge which post-COVID scenario throws upon to us, and how do we cope up with that challenge in terms of our training mechanisms, in terms of taking training from offline to online, in terms of content creation, in terms of use of videos, animations, etc. And large number of people, trainees sitting at home, large number of trainers sitting at home should be able to connect
through the use of internet, and that is a challenge. We also have, during the lockdown, we conducted 93 e-job fairs in which we connected the job giver and job takers, and about 5,000 people were given jobs simply through e-interviews, sitting at home. And just before I conclude and request other panelists to start speaking, I would also like to mention that employment exchanges we have in every district. We have 33 districts in the state, and we have about 38, 39 employment exchanges. And till now, the system was that the job seeker has to go there. He has to show his papers, his original papers. He has to register himself, and the staff has to take it on, and the whole process has to carry on. COVID also threw challenge of social distancing. People are unable to come, and people should be discouraged to congregate for just mere the purpose of getting themselves registered. So as a result, we are converting all our employment exchanges into online employment exchange, and which means it will be a portal, and people do not have to go to the employment exchange to get themselves registered and connect. So this is going to happen very soon, and these are some of the initiatives. And okay, so I would like to request Vijay. Okay, so I've given you overview of what Gujarat is doing, and some of the, for example, the KVK scheme. So we have Honorable Chief Minister with us. We have the full screen, please. Okay, so ब्राइट फ्यूचर के लिए जरूरी क्या है? कुशलता, इच्छा शक्ति और उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहें तो स्किल, विल और ज़ील। जैसे पंच महाभूतों से एक सक्षम शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही 5 स्तंभ वाले इस अभियान द्वारा सक्षम गुजरात, आत्मनिर्भर गुजरात के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और जब बात मजबूती की हो तो सबसे पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है, जिसके लिए शुरू किया गया ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम। गुजरात इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के तहत जर्मन सरकार की ऑर्गेनाइजेशन GIZ की सहायता से राज्य में अत्याधुनिक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स सेंटर्स शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। साथ ही GIZ के सहयोग से राज्य की ITI में इंटरनेशनल लेवल की हाईटेक लैब्स का भी होगा विकास। एक तरफ जहां हमारे युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्रीज की आवश्यकताओं पर आधारित स्किल्स, तो दूसरी तरफ एक ही साल में 4000 से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स को और 70,000 से ज्यादा युवाओं को इन एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ अप्रेंटिस के तौर पर जोड़ने का रिकॉर्ड भी गुजरात के नाम है। जैसे मैनेजमेंट क्षेत्र में IIM और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में IIT प्रसिद्ध है, वैसे ही अब हमारे गुजरात में भी होगी टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS की स्थापना। गांधीनगर के नासमेद में 20 एकड़ जमीन पर माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित भाई शाह के द्वारा इसका भूमि पूजन भी हो चुका है। परंतु आप कहेंगे कि कोरोना के प्रभाव से उद्योग भी नहीं बच पाए हैं। इस कोरोना महामारी में भी गुजरात के श्रम एवं रोजगार विभाग ने उत्कृष्ट कार्य किया है। एक तरफ श्रम कानून में सुधार किया, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत ली जाने वाली पूर्व अनुमति की संख्या
100 श्रमिकों से बढ़कर 300 कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट मजदूर अधिनियम 1970 लागू करने हेतु श्रमिकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई और फैक्ट्री अधिनियम 1984 के तहत कानून लागू करने हेतु श्रमिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। तो दूसरी तरफ वतन जाने के लिए इच्छुक लगभग 14 लाख श्रमिकों को रेलवे मंत्रालय के सहयोग से सुरक्षित घर पहुंचाया गया। अनलॉक 1 में उद्योग शुरू तो हुए, परंतु स्किल्ड वर्कर्स की कमी के कारण उद्योगों को कठिनाई पेश आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सक्षम गुजरात के तहत 5वें स्तंभ प्रोजेक्ट संकल्प की शुरुआत होने जा रही है। आज का समय स्किल का समय है। स्किल से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है और आपत्ति को अवसर में परिवर्तित करना गुजरात का संस्कार है, स्पिरिट है। आज कोरोना महामारी के इस कठिन समय में उद्योगों को, स्किल्ड वर्कफोर्स और युवाओं को रोजगार मिले, इस आशय के साथ हमने बाय द इंडस्ट्रीज, फॉर द इंडस्ट्रीज, इन द इंडस्ट्रीज के कंसेप्ट के साथ प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया है, जो कि आने वाले समय में कौशल विकास और रोजगार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा और इससे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर और सक्षम गुजरात का निर्माण करने के लिए और कदम बढ़ा रहे हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में इन 5 स्तंभ के निर्माण से सक्षम बनेगा गुजरात, आत्मनिर्भर बनेगा गुजरात। जय जय गर्वी गुजरात। जय हिंद। Okay, so I welcome all of you, and before I request Honourable Chief Minister to say a few words. Before that, I would like Mr. Peter Cook, British Deputy High Commissioner, to briefly tell him what we are doing, and then from Germany we have Rodney. He will be talking about what they are doing, so we have international perspective, and then we will have Honourable Chief Minister say a few words. Could we have Peter, please? Thank you very much indeed, and good afternoon, namaskar, and kemcho. I'm delighted to be joining this group and delighted to join the National Skills Summit here in Gujarat on World Youth Skills Day. I had the great privilege of listening to the Prime Minister, Mr. Modi, earlier on today, make a new slogan for India's future about skilling, upskilling, and reskilling. And I think that's a very appropriate a moment to try and understand what is happening. But thank you to everyone for allowing me to participate today. To the Honourable Chief Minister, Shri Vijay Rupani, the Honourable Minister for Labour and Employment, Shri Dilip Kumar Thakur, to the Additional Chief Secretary, Mr. Mitra. Very kind of you to invite me today. I want to say how much this is very important to my particular agenda. I was very pleased that last year the British government was able to support a program and indeed to set up a centre for excellence for skills for disabled people in Rajkot. And I thought that was a very important demonstration of our willingness to engage in this agenda, particularly between UK and India, but most especially in Gujarat. And I feel it's particularly important to recognize the minority communities that need the support of institutions and governments like the UK. So very pleased to pick that up. Delighted it was a part of our support. This is a very peculiar time for government in any country around the world, and the UK is no different. We are facing such challenges in our healthcare systems, in our physical and mental well-being, and also in our economic and our societal challenges. And I think we recognize that there is going to be a very profound change across many countries and across many different disciplines for what will our new society require, what will our new economy require.
And so much of our effort on an economic recovery is going to depend on how we adapt and adjust to the new challenges. I recognize that it's very much about building back better, how we can improve on the systems that we've had up to now to try and strengthen for the future so that we can be more resilient and we can withstand these shocks and these challenges. The skills agenda is a central part of any response. And as politicians grapple with how best to devise new policies to answer this challenge, I'm sure everyone is going to recognize trying to equip our young people, trying to equip our labor market with new skills and that flexibility that is going to be essential as we adapt to these challenges and as we adapt to the new environment after the coronavirus pandemic. We have discovered that we have a very important relationship with nature, with our climate, with our environment. And I think one of the things that the pandemic has taught us is that we need to reconnect with that in a better way. It's about the kind of recovery we want, about the kind of future that we want. And so we need to protect and restore nature. We need to reduce our exposure to these deadly viruses and also to understand the climate impacts. One of the slight benefits we've had from the pandemic is that we have made an adjustment in our climate footprint. And we've seen that in pictures around the world of cities that are smog-free, where the air pollution is much better. And that is certainly an adjustment we should understand. But it is important that as we lay the foundation for sustainable and inclusive growth and development, that we look to the new industries, the new technologies that are going to arise out of this particular situation. The challenges for public health, the challenges for biodiversity and for climate change, and ensuring that the young people have the skills for the future as a principal pillar of how we will respond. And that has been at the heart of the UK government's industrial strategy and its attempts to recover from this pandemic. We want to promote sustainable and inclusive growth, improving the affordability, the quality, the relevance, and indeed the balance, the equity balance of higher education, and particularly in the skills agenda, in technical and vocational education and training. And we've put a particular emphasis on that aspect. We recognized a few years ago that our academic support, our education policy was very strong in formal education, but less strong on informal education. And so the government in the UK set up a new qualification, a T level, to sit alongside O levels and A levels as the formal education, but this technical education to be a vital part of how we will cope better for the future, and to ensure that we have a balance between the academic side and the technical side. It's not just about what you know, it's about what you can do. And that's a very important element in the policy that the UK has adopted. We want to ensure that our labour market has the skills, has the flexibility, has the resilience to respond to the challenges it's going to face, to help people find better and more secure employment, to have a workforce that is relevant for the skills for our business needs in the UK. And that requires a very close dialogue between employers, between unions, between academic institutions, and indeed also to the government. It allows us, I think, to have a wider dialogue and to create a better ecosystem where a skills agenda can thrive and prosper. We recognize also that it is important in our achievement of the Sustainable Development Goals to ensure inclusive and equitable education and lifelong learning for all our citizens, contributing to that well-being of the population, where they feel valued, where they feel respected for their capabilities and for their work. It's also about eliminating the gender disparities in education, ensuring equal access to all levels of education, not just formal education, but also informal education, and to value both of those sides equally, to identify people with disabilities, minority communities, indigenous peoples, and especially children that suffer in very vulnerable situations. And as with the implementation of any policy framework, the aims of our research institutions, our higher education institutions, to support that skills agenda, to look for research partnerships, to unlock the existing skills gaps, and to try and propose possible solutions. And the way forward also by making use of the knowledge and expertise that we have, to disseminate ideas better, to bring about better working solutions, and to fill those gaps and those employability issues. And so the UK has spent considerable time looking hard at how it can develop
its skills agenda, from a strong emphasis on apprenticeships and trainee schemes, for this new qualification of a T level, for a closer dialogues with business to understand business needs and to ensure that we build educational programs that respond to business needs more accurately. In the coronavirus pandemic, the government has already responded to try and find new ways of encouraging this behavior in our society. It has provided money directly to business to recruit more new trainees. It is subsidizing every new trainee with £1,000 to the employer to make it affordable for the employer to take these new trainees on. It is also offering £2,000 for every new apprentice that a business will take on, to encourage them to look to young people for that new skill set and to invest in young people's knowledge, skills, and expertise. And perhaps the most important that they have announced since the coronavirus pandemic is a new scheme called the Kickstarter Scheme. £2 billion has been set aside to support businesses in this Kickstarter program to get more young people through education and into business and into industry and into commercial life. And that is also underpinned by a wider response on our green recovery, trying to recognize the benefits for climate change, for our environment, for the world that we have. Green recovery is going to be very important. And so there have been huge areas where the UK has tried to show some kind of leadership. But what is most important for me is trying to make sure that we work closely with our partners, especially in Gujarat. And I know that we want to do more to try and support that work. So I want to say thank you very much for this opportunity. Thank you very much for being able to address you all and to share a little bit of the UK experience, and also to take, I hope, forward the promise of working together in partnership and trying to make UK and Gujarat strong partners for the future. Thank you very much. I would, since Honorable CM is today, in fact, despite the cabinet, he's here today amongst us and he's hard pressed. I would request Shri to start the process of the portal. I think it's good. It sounded very good. Supreet, are you there? Sir, I'm here, sir, but I could not hear you, sir. There is a network issue at my end, sir. सर अगर सीएम साहब अगर परमिशन दे, सर हम प्रोजेक्ट संकल्प का लॉन्च कर सकते हैं, सर. Okay. I would like to request CM Saab to say a few words to everybody. आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे राज्य के एम्प्लॉयमेंट और लेबर मिनिस्टर माननीय श्री दिलीप कुमार ठाकुर जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री विपुल मित्रा जी, GIZ जर्मनी के प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर रूपनी रिवेरे, ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर मिस्टर पीटर कुक, यहां उपस्थित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD डॉक्टर मनीष कुमार जी, माननीय श्री नवीन मित्तल जी, डॉक्टर PK शुक्ला जी, श्री मुकेश पटेल जी, डॉक्टर रवि गुप्ता जी, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में हम सभी को अपने दायित्व का पालन करना जरूरी है, तभी हम कोरोना की यह जंग जीत पाएंगे। आज कौशल विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पीकर्स एवं गुजरात राज्य के उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के साथ
इस वेबिनार का अच्छा आयोजन किया गया है। इस वेबिनार का उद्देश्य है कि आने वाले समय में गुजरात के लिए स्किल की डिमांड और स्किल डेवलपमेंट का एक रोड मैप तैयार किया जाए। साथियों, किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग बहुत जरूरी है। भारत का 65% युवाओं के साथ विश्व का सबसे युवा देश आज भारत है। युवाओं को देश की भौगोलिक व्यापकता को पूरा लाभ मिले और अपनी निजी और व्यावसायिक बुद्धि के लिए सही दिशा भी मिले, ये बहुत जरूरी है। भारत जैसे युवा देश के लिए यह जरूरी है कि वह विश्व भर में स्किल्ड मैन पावर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करे और इस अवसर का लाभ ले। गुजरात इसके लिए तैयार है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। गुजरात अपने युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कई ऐसी योजना की शुरुआत की है कि जो युवाओं को भविष्य को पोषित कर सके। देश के युवाओं की शक्ति, सामर्थ्य और कौशल्य को एक नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 वर्ष पूर्व स्किल इंडिया मिशन शुरू किया था। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उस समझते हुए कि काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के दिन स्किल इंडिया मिशन इस सोच के साथ शुरू किया गया था। कौशल विकास एकांगी प्रक्रिया नहीं है, यह संकलित प्रक्रिया है जिसमें रोजगार के साथ शिक्षा का समन्वय करने की कुशलता की तालीम प्रदान की जाती है। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत में सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की शुरुआत गुजरात ने ही की थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने साल 2013 में महात्मा मंदिर संकुल में परिसर में इस चर्चा की शुरुआत की थी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने उस राष्ट्रीय परिषद में कहा था कि विकास का आधार ही कुशल युवा शक्ति है। स्किल प्लस विल प्लस झील इक्वल टू विन, यानी कुशल प्लस दृढ़ इच्छा शक्ति प्लस जोश इक्वल टू सफलता। तब से लेकर आज तक गुजरात ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। गुजरात के युवा शक्ति को स्किल बनाने के लिए गुजरात ने बड़ी संख्या में कई प्रयास किए हैं। स्किल इंडिया मिशन और स्किल पॉलिसी 2015 का उद्देश्य वर्ष 2022 तक में 40 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना है। इस पॉलिसी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने अलग कौशल्य विकास मंत्रालय की रचना की। साथ साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे वेंचर के साथ स्किल इंडिया जैसा एक भगीरथ अभियान की शुरुआत की। मेक इन इंडिया में रही प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी को साकार करने के लिए स्किल इंडिया का संपूर्ण सहयोग आवश्यक है। विश्व भर में एवं भारत में कौशल्यपूर्ण लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। हमने भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत गुजरात में स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम यानी कि संकल्प को लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से मिशन मोड में लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से युवा को संबंधित उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार तालीम भी दी जाएगी। इस प्रकार राज्य के उद्योग आत्मनिर्भर बनेंगे और गुजरात विकास की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। युवाओं को कौशल को
सही प्रशिक्षण मिले, इसके लिए गुजरात स्किल यूनिवर्सिटी की भी हमने स्थापना की गई है। साथ ही राज्य के उद्योग को उनकी जरूरत के अनुसार स्किल मैन पावर मिले, और इसके लिए हमने गुजरात स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की है। इतना ही नहीं, हाल ही में जनवरी महीने में हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान की भी एक नींव रखी थी। इस कार्यक्रम के दौरान भी अमित भाई ने कहा था कि यह संस्थान देश में रोजगार का राजमार्ग बनेगा। साथियों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है और यह हमारी मेहनत का परिणाम है। जहां आज आप देख रहे हैं कि देश के बाकी राज्यों बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं गुजरात देश का एकलौता ऐसा राज्य है जिसकी बेरोजगारी का दर देश में सबसे कम यानी 3.4% है। साथियों, आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है। गुजरात कोरोना महामारी के संदर्भ में सतर्कता के साथ आगे भी बढ़ रहा है। छात्र तथा युवाओं की पढ़ाई प्रभावित न हो तथा वे अपने घर घर पर ही कौशल्यवर्धक पाठ्यक्रम पढ़ सके, ऐसी अभिनव पहल गुजरात ने की है। लॉकडाउन के दौरान 700 सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा 12 विभिन्न ट्रेड के लिए 2000 घंटों इससे ज्यादा ई लर्निंग मटेरियल तैयार किया गया। तालीम लेने वाला विद्यार्थी के लिए परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए 10,000 MCQ की एक बैंक ऑनलाइन द्वारा मटेरियल वेबसाइट पर गुजराती भाषा में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध होगी। मुझे आज सभी के सामने ये कहते हुए भी आनंद हो रहा है कि गुजरात के युवाओं को स्किल होने के लिए प्रेरित हो, और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के राज्य में संपूर्ण लागू किया है। ये योजना युवाओं में इतनी अधिक लोकप्रिय हुई है कि आर्थिक मुआवजा देकर अप्रेंटिस की भर्ती के लिए औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने में गुजरात देश में सबसे आगे हो गया है। आज गुजरात में 46,000 से अधिक अप्रेंटिस तालीम ले रहे हैं। इंडस्ट्रीज के माध्यम से, इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री स्पेसिफिक तालीम के द्वारा उद्योगों को आवश्यकता के आधार पर मैन पावर और राज्य के युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर योजना को गति देने के लिए आज गुजरात राज्य के श्रम और रोजगार विभाग द्वारा प्रोजेक्ट संकल्प को लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से युवाओं को संबंधित उद्योगों की आवश्यकता अनुसार तालीम दी जाएगी और इस प्रकार उद्योग आत्मनिर्भर बनेंगे। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा की गई पहल आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हम सबको वोकल फॉर लोकल बनना पड़ेगा और इसके लिए भारतीय प्रोडक्ट्स को जितना संभव हो उतना ही प्राधान्य देना पड़ेगा। इस प्रकार देश की जरूरतों को देश की ही प्रोडक्शन से पूरा करते हुए रोजगार और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। ऐसे में यह जरूरी है कि युवाओं को नवीनतम तकनीक की जानकारी रखते हुए उन्हें स्किल बनाए जाए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने युवा शक्ति के भरोसे पर ही नए भारत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प किया है। इसलिए यह जरूरी है कि युवाओं को नवीनतम स्किल के नाम के साथ हम लोकल को वोकल करेंगे। भारत माता को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के साथ एक बार फिर जगत गुरु बनाएंगे। आज नेशनल स्किल समिट के इस अवसर पर मैं युवा शक्ति को कहना चाहता हूं कि आप सभी इस देश के भविष्य हो। इसलिए इस देश को आगे ले जाने के लिए और इस देश को एक बार फिर विश्व का महान देश बनाने के लिए
आप सभी आगे आएंगे। नवीन पर्व के लिए हमेशा नवीन प्राण चाहिए। युवा शक्ति अपने नवीनतम नवोन्मेषी विचार, नवाचार, नवीन ज्ञान के लिए साथ ही विश्व की युवा शक्ति के साथ नहीं बल्कि उससे भी ऊपर उठकर खड़ी हो, और यही हमारा संकल्प आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर, इस अवसर पर हमारा संकल्प होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन उद्देश्यों और संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम सभी जरूर कामयाब होंगे। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद। भारत माता की जय। So I would like Ravi Gupta to give a vote of thanks for the Chief Minister, please. नमस्कार सर। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आज आप इस कार्यक्रम में आए और आज आपने स्किल डेवलपमेंट का जो महत्व है आज के युवाओं के लिए उसके बारे में बताया, और जो गुजरात सरकार के जो मेजर इनिशिएटिव्स है उसके बारे में आपने जानकारी दी। और सारे जो युवा है आज बड़ी उम्मीदों से आज गुजरात सरकार को देख रहे हैं कि आज गुजरात सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य है, और यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव होंगे उससे और भी राज्य इंस्पायर होंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम मैं रवि गुप्ता फ्रॉम एलेट्स टेक्नोमीडिया बहुत बहुत धन्यवाद गुजरात सरकार का कि हमको इस कार्यक्रम में पार्टनर करने का हमें जो है मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। We will continue. I'll just see of the Chief Minister and then please continue. Maybe request Dr. Rodby to speak, please. Sure, I'll be happy to. Good afternoon, everyone. Thank you very much for inviting me to join on this very important occasion on the Skills Day in Gujarat. And thank you then to the Honorable Chief Minister, Shri Vijay Rupani, and of course the Honorable Minister, Shri Dilip Kumar Thakore, and of course Vipul and the other dignitaries and distinguished persons who have graced us with their knowledge and their wisdom. I'm going to speak just very briefly about what Germany is doing in terms of the skilling environment in response to the COVID emergency and the pandemic. Because Germany is renowned throughout the world for its skilling programs, in particular its so-called dual education system, where the apprenticeship program is integrated into the curricula and integrated into the whole learning structure for the technical education, and it results in some of the highest qualified and some of the best skilled labor in the world. And this model is one that is often being replicated throughout the world. GIZ, in fact, is it's one of the areas which the GIZ has as a very strong point in the GIZ's portfolio of technical support that it provides around the world. As we saw from the video, from what I could understand with my extremely limited Hindi and even more limited Gujarati, I thank you very much for mentioning the support and the cooperation that the GIZ is having with the Gujarat government in terms of working on improving the quality of the ITIs and the instruction, and also in terms of improving the quality of the ITI teacher preparation. One important aspect that we want to work on is the practical side. So that way the ITI teachers have as much practical training as possible that they can then transfer this into more effective instruction in their own lessons when they're teaching the children and the students. And we will be working then the next 3 years, at the very least, to upgrade the Apex Technical and Teacher Training Institutes, the GATI, as it's being called
In addition to this, we are also working with one of the strengths that Germany has, which is the linkage between the public sector and the private sector, particularly in the TVET ecosphere and the skilling ecosphere. In fact, in many ways, the TVET system in Germany is a private sector initiative which the German government supports, because this acknowledges how important skilled labor is for the private sector as well as for the public benefit and for the public good, general economic growth. This hasn't changed by COVID, of course. In fact, no countries are immune to COVID. Germany also was affected very heavily by the pandemic. In fact, a little quick history: on the 17th of March, all of the schools around Germany were closed, including all of the TVET schools. They were then gradually reopened on the 4th of May, but only for those students in their final year. The other students were required basically to spend their time at home or at their workplaces, because the apprenticeships, where social distancing was possible, the apprenticeships actually continued during the COVID pandemic and during the lockdowns, because except in places where businesses were closed, which were very few places, the apprenticeships continued to do their work, continued to do their studies in their workplace, which I think was quite an innovative approach that not many countries have tried that I've heard. And then starting at the 15th of June, so just exactly 1 month ago, the schools started to reopen. But only 50% of the time that they would normally be in the school were they allowed to be in the school. The other 50% of the time was then transferred to online learning. And even now, 80% of the staff are working. Again, the other 20% are not allowed to work for medical reasons. Either they themselves are in the risk group over 60, or they have preconditions which would make them more susceptible to severe case of the COVID virus. So that is the current situation. In fact, although a couple of the other points, when schools were reopened, and even to the day, when students return to school, they are checked for their temperature, they are checked for symptoms, they are checked whether they are wearing a mask, and of course this is done by the teachers as the students arrive in the schools, because they don't want the schools, of course, to become hotbeds for transmission of the virus. In terms of program adaptation, interestingly enough, there hasn't been a huge change yet, but there is a big shift in German economy overall towards a carbon neutral approach. So the green industries, the green sectors, those areas which are carbon neutral or even carbon positive, those are the ones that are receiving more emphasis. And therefore, this will be reflected in the future training programs in Germany, I'm sure. Then those, I think, are the key points at this point. But let me talk 1 second about, or a moment about, some of the unexpected effects that we have had. Like most countries, or probably all countries, Germany wasn't prepared for the pandemic, particularly not in the school system. The teachers, they were forced, like in India, to suddenly provide instruction online, even though they had no preparation for that. So the quality of the instruction was varied very much depending on the capacity and the ability of the teachers to use modern IT communication equipment and computers and the like. Some were quite good and some were not. So one of the results has been, in fact, a very great increase in the ability of teachers in their IT and their communication skills online. I have to say, though, unfortunately, it wasn't in a structured way. It was more an ad hoc learning by necessity and learning by doing. This is perhaps something that we could learn with, and perhaps we could learn from, and perhaps in the GIZ could also work with, is to develop programs for teaching how to teach online, because that in itself is a set of skills that, particularly in the skilling world, in the skilling ecosphere, this is a set of skills which is rather underdeveloped, I would imagine. I know it was in Germany, and I know that that Mr. Mitra
did say that 2,000 hours of instructional material have been uploaded for use in skilling in Gujarat. And that's a very impressive number. And I know that the teachers, the ITI teachers, have been doing their very best to transmit the knowledge that they need to and to be working with their students. And but I still think that there's going to be gaps in this area in terms of the ability to particularly work on the practical aspects. So as I said, the German fame very much lies in the dual education system, which means half of the learning, or half of the time at least, is spent in the school, and the other half is spent in the workplace, learning on the job, learning with proper in-company trainers who have also gotten some pedagogic training and who have also are experienced on the equipment, which they are then teaching the students how to use. Now, these are areas which the GIZ will be working with the Gujarat government in over the next few years, and I look forward to this cooperation. That's the close of my comments. I'm open, of course, for any questions that you may have. Thank you very much. Thank you, Dr. Rodney. I thank all the esteemed speakers who have attended the session here, especially British Deputy High Commissioner Mr. Peter Cook and Dr. Rodney Revere from GIZ. We've had multiple panel discussions with us. We have been having Naveed Mittalji, Mukesh Patelji is online, Dr. P.K. Shukla is also scheduled to take another panel discussion, and obviously CEO of ELETS is also on our panel. Dr. K.P. Krishnan has been on an erstwhile panel discussion, and so has been Mr. Shrikant Sinha, A.K. Tomar, and Sunil Nigandiji. I thank all the esteemed speakers and our minister and our chief guest, CM Sir Vijay Rupani ji, for their presence in this inaugural session. मैं यहाँ पे उपस्थित सारे हमारे स्पीकर और ख़ास तौर पर हमारे मंत्री श्री दिलीप ठाकुर और हमारे सीएम साहब विजय रूपानी जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो हमारे सेशन में आए यहाँ पे और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट संकल्प का भी लॉन्च किया. सारे स्पीकर्स का धन्यवाद. हम इसके बाद टेक्निकल सेशन क्लोज करके अपना जो सेकंड पैनल डिस्कशन है उसकी तरफ जा रहे हैं. वी विल क्लोज द inaugural session and we'll go over to the second panel discussion. Thank you very much, all of you. Thank you and good luck.